Hello viewers, how are you doing? Hope you all are fine. In our today's video, I am going to discuss about the second unit of on examination. I have uploaded two videos on first unit of on examination. Let's recall what we have discussed in our previous two videos of on examination. The first unit of on examination tells us about the fear of our writer Winston S. Churchill, and he narrated that he has a certain type of fear regarding examination, okay, as all the students have towards the examination, okay, and he considered examination as an unhospitable region, okay, and he also said that examinations were the great trial for him, okay, and in that unit, in the first unit, he also narrates that how he was completely unable to write a single satisfactory answer on the entrance examination sheet. He left his Latin paper completely blank, okay, and apart from that he has the good fortune to get entry into the Harrow School, okay, and he was appearing for the examination of entrance for enrolling himself in the standard 4, okay, and he was quite fortunate. He was enrolled in standard 4 of Harrow School with the grace of the headmaster of Harrow, Mr. Dr. Weldon, okay, and in our today's video we will discuss about the second unit of on examination. We will see what is written, what is narrated by the writer Winston Churchill in the second unit. In the second unit, we will get to that he will narrate about the development of his English language, how he was assigned to sit in the English class, okay, and in the school he was considered as the dunces, he was considered as the slow learner, because after the entrance examinations his name was in the below, just in the bottom of the merit list, okay, because he has not written anything in the examination sheet. That's why with the grace of headmaster his name was below, his name was in the bottom of the merit list, okay, and he was considered as a slow learner in the school. That's why he was assigned to sit in the English class, okay, and in the second unit we just come to know that who was his English teacher, how he got good command over English, and what type of homework, what type of actions taken by his English teacher for the development of the English of slow learners of Harrow School. These are the matter of discussion in our today's video, okay. Let's focus on what is written in the paragraph of second unit. Before going to the text of second unit, we just have a look on what is written in the warm up of unit 2. Unit 2 warm up. Think of the role of a teacher in student's life. Does not a teacher facilitate the learning of a pupil and develop skills in him or her? Read the following unit of the text and note the role played by Mr. Somerville in the writer's education at Harrow, okay. I have told you that the second unit is completely regarding the English teacher of Mr. Winston Churchill, okay, as he was assigned to sit in the English class because he was considered as slow learner, okay. And before going to the text, there is a thing that what is the role of a teacher in student's life. You all know that what role teacher plays in overall development of a student's life, okay. Here also in this particular chapter our writer Winston Churchill is going to narrate, going to describe about the things what he gained from the advantages, what he gained from his English teacher known as Mr. Somerville, okay. Let's begin with the text. Unit 2, the text. I continued in this unpretentious situation for nearly a year. However,
By being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the cleverer boys. They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that, but I was taught English. We were considered such dunces that we could learn only English. Mr. Somerville, a most delightful man to whom my debt is great, was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. He knew how to do it. He taught it as no one else has ever taught it. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practice continually English analysis. Okay. So here in this particular unit, the narrator, the writer Winston S. Churchill focuses on his English learning, how he was assigned to learn or sit in the English class because he was the last boy of the class, because he was considered as the slow learners of the class. Okay, that's why all the cleverer boys of the class who got good merit list in the entrance examination, they were enrolled to sit in Latin and Greek classes, and those who were the slow learners of the school, they are allowed to sit in English class. Okay, and he has also said that in the previous unit we have discussed that his names were in the bottom of the merit list, and he knows that he has to remain in that unpretentious situation for nearly a year. ओके से जानी थिले गोटे वर्ष पूर्वरु तांकर मेरिट रे तांकर पोजीशन रे कोनोसी चेंजेस हबो नाही, से एटा सबुठ भल भाव रे जानी थिले. However, by being so long in the lowest form, I gain an immense advantage over the cleverer boys. ओके जेहेतु तांको गोटे अनुतप्त लागुथला कि एते महान एते बड़ व्यक्तिंकर एते महान व्यक्तिंकर पुत्र हिसाब रे से क्लास रो शेष बॉय थिले, लोक मैंने जिते बड़े टाहीटा परा करुले खराब लगुला, किंतु से भी गोटे पॉजिटिविटी से पाई जाइए कि कहले लोएस्ट फॉर्म रे लास्ट फॉर्म रे सब बड़े रहिबा सत्य और थर्ड सेक्शन रे और लोएस्ट सेक्शन रे सब बड़े रहिबा द्वारा तांको भीतर गोटे पॉजिटिविटी आसी जाइथिला. कोन से स्कूल रो जो क्लेवरर बॉयज माने थिले से मानक ठारू से पादे आगु को थिले. Okay, and he gained lots of advantages being remaining in the lowest form. Lowest form रे रही कि भी से किछि advantages पाई थले. कौन से थिला advantages? They all went on to learn Latin and Greek and splendid thing like that, but I was taught English. So they were allowed to sit in the Latin and Greek class, and they were allowed to read the splendid thing like Latin and Greek. That means एटा तांकु सम्मानर सहित पठा जाइथिला गोटे हायर लैंग्वेज शिखिबा पई, लैटिन और ग्रीक शिखिबा पई, एंड राइटर को पठे दिया जाइथिला इंग्लिश लैंग्वेज शिखिबा पई. बट आई वाज टॉट इंग्लिश. वी वर कंसीडर्ड सच स्टूडेंट्स दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश. तो स्कूल रे से स्लो लर्नर थिले, एंड तांको भड़ी आउरी जो माने स्लो लर्नर थिले से मान को पठे दिया जाइथिला कोठी कि इंग्लिश क्लास रे पठे दिया जाइथिला, एंड से समय रे तांको स्कूल रे कंसीडर करा जाउथिला इंग्लिश एज ए डिसरिगार्ड थिंग. दैट मीन्स इंग्लिश इज एज ए मियर थिंग, गोटे सामान्य जिनिस, बिकॉज दे आर फ्रॉम द इंग्लिश कंट्री, से माने इंग्लिश कंट्री रू बिलोंग करथिले. ओके जेमिति कि आमे ओडिसा रे रहूछु, हमर ओडिया लैंग्वेज को आमे एते गुरुत्व दउ ना हूँ, हमर मदर टंग को एते भाषा को एते गुरुत्व दउ ना हूँ. सेम थिंग हैपेंस विथ द राइटर मिस्टर विंस्टन चर्चिल, दैट तांको स्कूल रे इंग्लिश को एते प्राधान्य दिया जाउ नथला, फॉरेन लैंग्वेज लैटिन एंड ग्रीक को सेति को प्राधान्य दिया जाउथला, ताको ऑनर बोली बुझा जाउथला. ओके जो माने क्लेवरर बॉयज माने थिले, जो माने मेरिटियस बॉयज थिले, मेरिटियस स्टूडेंट माने थिले, से माने को अलाउ करा जाउथला ग्रीक एंड लैटिन ने की पढ़िबा पई, एंड जो माने स्लो लर्नर थिले, जो माने डल स्टूडेंट थिले, से माने को इंग्लिश क्लास रे पसई दिया जाउथला. We were considered such dunces that we could learn only English.
Mr. Somerville, a most delightful man to whom my debt is great, was charged with the duty to teach the stupidest boy the most disregard thing, namely to write mere English. So that time in their school, at the Harrow school, English is regarded as the mere thing. Okay, सामान्य जिनिस and disregard thing ताकू मना जाउतला, means these are the language of the third class student. Okay, and see lower form रो स्टूडेंट मान को पाई से लोअर डिवीजन रो स्टूडेंट मान को पाई असाइन करा जाइतला जने टीचर को जहां कर ना थिला मिस्टर समरवेल तांको ना थिला, तांको ड्यूटी दिया जाइतला, तांको चार्ज दिया जाइतला कि केमिति ए स्लो लर्नर्स मानकर ओवरऑल डेवलपमेंट हबो इंग्लिश रे. ओके, एंड केमिति से स्लो लर्नर्स माने मियर इंग्लिश साधारण सामान्य इंग्लिश लेखाटा केमिति शिखि पारिबे ता प्रति गुरुत्वारोप करिवा पाई, ता प्रति ध्यान केंद्रित करिवा पाई मिस्टर समरवेल को दायित्व दिया जाइथेला. ओके, he knew how to do it. He taught it as no one else has ever taught it. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practice continually English analysis. कहले इंग्लिश टीचर जो आमर थिले मिस्टर समरवेल थिले, ओके, से जानी थिले केमिति डंसेस मानन को, केमिति स्लो लर्नर्स मानन को, केमिति लोअर स्टैंडर्ड रो पिला मानन को, ओके, केमिति टैकल करा जीवो, केमिति तांको इंग्लिश पढ़ा जीवो, ओके, केमिति तांकर ओवरऑल डेवलप करा जीवो, डेवलपमेंट करा जीवो इंग्लिश रे, दैट ही नोस बेटर. ओके, ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज एवर टॉट इट. तांको पाखरे से कमांड थिला, तांको पाखरे से एबिलिटी थिला, से एभलिया भाबरे पढ़ाई पारुथिले पिला माननकु जोटा कि आउ केही से भलिया पढ़ाई परिबे नाही बोली हम राइटर कहउछंती. नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थॉरोली, केवल से इंग्लिश पार्सिंग ता सिखु नथले. पार्सिंग कहा जाए तार डाइसेक्ट करेगी, तार एनालिसिस करिबा, इंग्लिश लैंग्वेज रो एनालिसिस करिबा को पार्सिंग कहा जाए. दैट मीन्स सिलाबल बाय सिलाबल ताको सेपरेट करी कि, ओके, कोटा नाउन, कोटा वर्ब, कोटा एडजेक्टिव, कोटा प्रोनाउन, ओके, ए सब डिफरेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करिबा, ऑपरेशन करिबा, लैंग्वेज को ऑपरेशन करिबा, सेपरेट करिकी पढ़िबा को पार्सिंग बोली कहा जाए. ओके, पार्सिंग means deep analysis of anything. Okay, parsing thoroughly, but we also practice continually English analysis. Okay, केवल से खाली पार्ट करके बतौ नथिले, ताहा सहित तार एनालिसिस भी बतौतले, तार इम्प्लीमेंटेशन भी बतौतले, तार मीन्स ग्रामर फॉर्म रो इम्प्लीमेंटेशन, तार एनालिसिस डे टू डे लाइफ रे केमती यूज करा जीवो से सब जिनिस. दैट मीन्स कंप्लीट एबीसी ऑफ इंग्लिश ग्रामर सिखौथिले मिस्टर समरवेल डंसेस स्टूडेंट मानंकु. Okay, for that reason our writer considered that his teacher Mr. Somerville has the tremendous ability to teach the student like us, to student like our writer. Okay, and no other teacher can taught like him. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practiced continually English analysis. Mr. Somerville had a system of his own. He took a fairly long sentence and broke it up into its components by means of black, red, blue and green inks: subject, verb, object, relative clauses, conditional clauses, conjunctive and disjunctive clauses. Each had its color and its bracket. It was a kind of drill. We did it almost daily. Okay, before this line we know that our writer confesses that his teacher Mr. Somerville has a very fine technique of teaching English to the slow learners, and here he defined that, here he explained how Mr. Somerville took pains to clarify the doubts of English grammar of the low learners, slow learners, and he said that Mr. Somerville had a system of his own. His teacher Mr. Somerville has the technique of his own, tankara nijaswa gote
टेक्निक थिला जहाँ द्वारा कि से डांसेस स्टूडेंट मान को वेरी क्लियर कट आइडिया इंग्लिश ग्रामर उपरे इंग्लिश एनालिसिस उपरे इंग्लिश लैंग्वेज उपरे दे पारुथले कौन थिला तांकर टेक्निक he took a fairly long sentence and broke it up into its component by means of black red blue and green inks ओके तांकर जो टेक्निक थिला निजस्व जो टेक्निक थिला सेथरे से कोन करथले गोटे लंबा सेंटेंस नउथले इंग्रजी रो गोटे लंबा सेंटेंस नउथले एंड तार जो सेंटेंस रे जो सब अलग अलग कंपोनेंट्स रहुतला ओके अलग अलग क्लॉजेस सब रहुतला ताकू डिफरेंट डिफरेंट इंक द्वारा मार्किंग करुतले रेड ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन इंक द्वारा का सेपरेट सेपरेट इंक द्वारा मार्किंग करुतले कोन कंपोनेंट सब रहुतला से सेंटेंस रे लॉन्ग सेंटेंस रे subject verb object relative clauses conditional clauses conjunctive and disjunctive clauses ए सब जो हमर ग्रामर रो पार्ट सब रहतला कंपोनेंट्स रहतला क्लॉजेस पाई रिलेटिव क्लॉजेस पाई गोटे कलर कंडीशनल क्लॉजेस पाई गोटे कलर एडवर्ब पाई गोटे कलर सब्जेक्ट पाई गोटे कलर वर्ब पाई गोटे कलर ऑब्जेक्ट पाई गोटे कलर ए सब प्रकार कंपोनेंट्स को सेपरेट सेपरेट कलर द्वारा से मार्किंग करिकी स्टूडेंट मान को पढ़ौथले जहाँ द्वारा कि स्टूडेंट मान को आइडेंटिकल कलर देखिकी से कंपोनेंट को बुझिवा पाई बहुत इजी होथला से माने इजीली सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट को सेपरेट सेपरेट इंक माध्यम रे जो सेपरेट करा जाउथला ताकू देखिकी से माने इजीली इंग्लिश पार्सिंग इंग्लिश ग्रामर टाकू से माने लर्न करि पारुथले ओके इच हैड इट्स ओन कलर एंड इट्स ब्रैकेट सब कंपोनेंट को अलग अलग कलर एंड अलग अलग ब्रैकेट रे रखा जाउथला इट वाज ए काइंड ऑफ ड्रिल वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली तो इट राइटर कहिले इट वाज ए काइंड ऑफ ड्रिल एटा गोटा प्रकार मॉक ड्रिल थिला प्रैक्टिस थिला जोटा को से रेगुलर बेसिस रे से करूथले ओके एंड रेगुलर बेसिस रे तांको एटा करा जाउथला तांको टीचर समरवेल को द्वारा एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड फोर्थ 3 times as long as anyone else I had 3 times as much of it okay as I remained in the third fourth 3 times as long as anyone else I had 3 times as much of it तो ये राइटर कहउछंती से फोर्थ फॉर्म रो लास्ट पोजीशन रे थर्ड पोजीशन रे 3 वर्ष काल से रहिले okay for 3 times as long as anyone else that means he was quite failure in qualifying the standard 4 last form or third form that means third grade रे ओके से 3 वर्ष काल से रहिले जहाँ द्वारा कि तांकू आहुरी इजी हे गेला कि इंग्लिश ग्रामर रो कंप्लीट स्ट्रक्चर को बुझिबा पाई इंग्लिश ग्रामर रो कंप्लीट नॉलेज तांको भितरे आसी जाइथला ओके third fourth 3 times as long as anyone else I had 3 times as much of it कहले अलगा पिलांका तुलना रे मु से जिंस को 3 थर पढ़ी थली ओके जेहेतु से 3 थर स्टैंडर्ड 4 रे रहिले सेति पई तांकू 3 थर पढ़िले जहाँ द्वारा कि से एक्सपर्ट हेई पारी थिले I learned it thoroughly thus I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence which is a noble thing for him he said okay कहले I learn it thoroughly जेहेतु से 3 वर्ष काल से क्लास रे रहितले सिमिलर क्लास रे से thoroughly ता विषय रे ज्ञानटा पाई जाइथिले and लास्ट को से कहउछंती I got into my bones the essential structure of ordinary English sentences कहले जो ऑर्डिनरी इंग्लिश मियर इंग्लिश कह जाउथला तांको स्कूल रे इंग्लिश टाकू तार कॉमन स्ट्रक्चर तार जो स्ट्रक्चर सब अछि एसेंशियल स्ट्रक्चर अछि तार जो ग्रामर अछि तार रूल्स जो अछि यूज करिवार ताकू यूटिलाइज करिवार से सब जिनिस तांको बोन भितरे प्रवेश करि साइतला दैट मीन्स ही गेन ट्रेमेंडस कमांड ओवर द एसेंशियल ग्रामर रूल्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ओके एंड that was a type of advantage for our writer Winston Churchill which is a noble thing he said that British English which is regarded as the mere thing for his school fellows or cleverer fellows of his school and for him for the writer English is considered as the noble thing because he has spent 3 more years
to learn the essential structure of English grammar. And when in after years my school fellows who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again to common English to each to earn their living or make their way, I did not feel myself at any disadvantage. कहले तो नोबेल इंग्लिश एथिपाई कहले कि तांकर जो क्लेवरर बॉयज माने थिले जो माने कि डिस्टिंक्शन पाइथिले जो माने कि सम्मान पाइथिले जो माने कि प्राइजेस भी जीतिथिले कोथि पाई ब्यूटीफुल पोएम लेखिकी ग्रीक रे लैटिन रे पिथी एपिग्राम लेखिकी लैटिन रे एंड ग्रीक रे से प्राइजेस पाइथिले एट लास्ट तांकर ब्रेड एंड बटर पाई अर्निंग्स शिखिबा पाई से माने इंग्लिश क्लास को आसिले एंड से समय रे से निजको फॉर्च्यूनेट भाबुथिले जे काहे कि ना सेते बेले तांकर इंग्लिश ऊपर कंप्लीट कमांडटा आसी जाइतला जोटा कि तांकर क्लेवरर स्कूल फेलोज मानको पाखरे काठिकर पाठ थिला तांको पाई एटा कष्ट साध्य थिला. I did not feel myself at any disadvantage. तांको इनिशियल टाइम रे जो खराब लागुथला कि से डांसेस कंसीडर करा जाउथिले किंतु परवर्ती काल रे से जेते बेले देखिले क्लेवरर बॉयज माने आसी कि इंग्लिश क्लास रे बसिले से देखिले से एडवांटेज स्टेज रे अछंती तांको किछि डिसएडवांटेजेस लागु नथिला. Naturally I am biased in favor of boys learning English. I would make them all learn English and then I would let the cleverer ones learn Latin as an honor and Greek as a treat. तो कहले जो स्कूल रो तांकर जो ब्रिटिश रो स्कूल रो सिस्टम थिला कि इंग्लिश लर्निंग को नहीं कि केवल डांसेस माने इंग्लिश पढ़ी पारिबे एंड क्लेवरर बॉयज माने तांकर लैटिन एंड ग्रीक पाठ सारिबा परे लास्ट को आसी कि से माने इंग्लिश रो किछि पोर्शनटा लर्न करिवे ए जो सिस्टम थिला स्कूल रे सेटा तांको खराब लागुतला से चाहुतले कि समस्त फर्स्ट इंग्लिश लर्न करंतु फर्स्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे मे बी डांसेस दे मे बी स्लो लर्नर्स दे मे बी the clever learners both have to took part in the English class, both have to learn English as a general subject, as a common subject, and after that whosoever is regarded as the cleverer one they may go to the Latin and they may go to the Greek classes. Okay, first से तांको बायस लागुथला तांको खराब लागुथला जो ब्रिटिश स्कूल सिस्टम जोटा थिला इंग्लैंड रो जो स्कूलिंग सिस्टम थिला कि क्लेवरर बॉयज मानन को लैटिन ग्रीक पई पठा जाउतला आ जो माने स्लो लर्नर्स थिले तांको इंग्लिश पढ़िया पई पठा जाउतला से चाहुतले कि सबु छात्र छात्री माने से क्लेवरर हुअंतु कि स्लो लर्नर हुअंतु प्रथमे इंग्लिश पढ़िबे तापरे सेथिरे उत्तीर्ण हला परे जाई कि ग्रीक आ लैटिन नै कि पढ़िबे. But the only thing I would whip them for would be for not knowing English. I would whip them hard for that. तो ये बहुत important thing से कहउछंती कि but the only thing I would whip them. Whip means हरई परिबा मात देबा whip को जाए मारिबा को भी कहा जाए whip चाबुक रे मारिबा को भी कहा जाए whip कहा जाए but एठी to defeat करिबा तांको हरईबा. ओके तांको सहित कोन सामना सामनी हे कि तांको कोन डिफीट करबा को एडी व्हिप कहा जाए कि कहले मो गोटी जिंस रे से क्लेवरर बॉयज मान को हरई पारिबी सेटा होची कोन नोइंग इंग्लिश नॉलेज रे जेहेतु से माने लैटिन एंड ग्रीक रे मास्टरी हे कि आसिले कमांड नै कि आसिले किंतु तांका पाखरे इंग्लिश रे कमांड नथला किंतु मो पाखरे मो जेहेतु 3 वर्ष काल इंग्लिश पढी छी स्टैंडर्ड 4 रे एंड मो पाखरे वेरी गुड कमांड अछि इंग्लिश रे मो सही थरे इंग्लिश रे तांको हरई पारिबी. आई वुड व्हिप देम हार्ड फॉर दैट. ओके मो बहुत सख्तर सहित कठिनतार सहित से मानकु मात दे पारिबी. ओके हरई पारिबी इंग्लिश रे. दैट मीन्स by remaining in the third form of standard 4, okay, last form of standard 4, he gained immense advantages from learning English and he considered English as a noble thing. Okay, and this chapter focuses on this particular unit throws light on the English learning process of our writer, how he gained immense advantage by sitting in the English learning class, and he was very much thankful
to his English teacher Mr. Somerville, who took pains to provide the essential structure, essential rules of English grammar. This is all about the second unit of on examination.